So, dear students, hope you are very well, you are doing well at home. So, do focus on the studies in these crucial times. So, it's the bad luck we are suffering, it is pandemic. So, stay home, stay safe, and do focus study on your studies and do creative activities at your home. So, once again, welcome in the class. So we are discussing the sexual reproduction in the plants, and we have discussed in our series of lectures about the structure of the plant, various parts of the plant. We have discussed the essential parts, we have discussed the non-essential parts, and what are essential parts, what are non-essential parts, वो आपको अच्छे से आपने समझा, ठीक है। और उसके बाद हमने डिटेल्ड में गए इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ और डिफरेंट फ्लोरल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम गए कि फ्लोरल पार्ट्स या टर्म्स जो हम यूज करते हैं वो हमने स्टडी किया था। और अब हमारा जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक इन एज पर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कंसर्न्ड इन द प्लांट्स, दैट इज पॉलिनेशन. That is pollination. So here I am going to write it down. The topic of pollination. Pollination is the topic of the today. We are going to discuss now pollination, and it is the important event as per the sexual reproduction in the plants is concerned. Pollination, it's very important, very important. So before going to the pollination, I will recapitulate some memories about the essential parts, because essential parts are the parts which are directly involved in the sexual reproduction, and pollination is the first event in the sexual way towards the sexual reproduction. So we will recapitulate here about something about the sex of the flower. So we will discuss about sex of the flowers. Sex of the flowers. Sex of the flowers. So we will discuss, before going to the pollination, we will be well aware, we should be well aware about the sexes of the flower. We have different types of flower, like we have heard about the unisexual flowers, bisexual flowers, or deuter flowers. We will see, because these terms are going to be very important in the pollination. So before going to pollination, I will discuss and I will clear these terms. What are the unisexual flowers, what are the bisexual flowers, as per the sex of the flower is concerned. So as per the sex of the flower concerned, we are going through different terms. We met with the different terms. Now, one of the terms is very essential according to the sex of the flower. We have monoclynous flowers. We have monoclynous flowers, or that are also called bisexual flowers. Bisexual flowers are also known as hermaphrodite. Hermaphrodite flowers. So before going to pollination, we will clear about our concept about what are monoclynous flowers, or what are bisexual flowers, or what are hermaphrodite flowers. So as we have already gone through the series of lectures, we have now well aware of what are the essential parts of the flower. Essential parts of the flower are stamen and the carpel, the male part and the flower part, which are directly involved in the process of reproduction. Now, if in the flower both the essential whorls are present, the flower is said to be monoclynous or bisexual or hermaphrodite. So both the essential parts are present. यानी हमारे पास एक ऐसा फ्लावर है जिसमें दोनों पार्ट्स प्रेजेंट है, मींस एसेंशियल पार्ट यहां पे क्या है? We have stamen, the male part of the flower, and we have carpel, the female part of the flower. So both male part and the flower female part, that is stamen and carpels, are present in this very much flower. So this very much flower is known as monoclynous or bisexual as per the sex of the flower is concerned. So what are bisexual flowers now, or what are monoclynous flowers now, or what are hermaphrodite flowers now? We will definitely make our answer that when the both essential whorls, that is both essential parts of the flower are present, stamen is also present, carpel is present in the same flower, the flower is said to be monoclynous. ठीक है? For like हमारे पास easily आप आज जा सकते हो, जैसे हमारे पास आज mustard flower, अगर आप देखोगे mustard flower, तो आप देखोगे इसमें दोनों पार्ट मौजूद होते हैं,
स्टैमिन भी, कार्पल भी। इन डिफरेंट कंडीशन में कार्पल हो सकता है, स्टैमिन हो सकता है, लेकिन स्टैमिन भी है, कार्पल भी है। सो इट इज अ बाइसेक्सुअल और मोनोक्लाइनस फ्लावर। ओके, नाउ अनदर टर्म इज डाइक्लाइनस। Diclinus, or it is also known as unisexual. If I'm going in a right direction, and I think you should be well aware now about it. Is simple, easily, and it will make by there is two. Sexual means sexes, so two sexes, that is male sex and flower, female sex is present in the same flower. Now uni or monosexual or heterosexual means only one essential part is present. So when only one essential part is present, only one essential part of flower is present. So simple सी बात है बेटा, अभी इसमें कोई उतना मसला नहीं आया कि यहाँ पे बाइसेक्सुअल फ्लावर में, मोनोक्लाइनस कंडीशन में, फ्लावर में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट है, जो मॉडिफाइड शूट है या कंडेंसेड शूट है, इस फ्लावर में इजी है, स्टैमिन भी मौजूद है, कार्पुल भी मौजूद है, यानी इसमें मेल पार्ट भी है और फ्लावर फीमेल पार्ट भी एक ही फ्लावर में। तो इस फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल कहते हैं, इसमें दोनों सेक्सेस मौजूद हैं या हर्माफ्रोडाइट। और यहां पे बात हो रही है कि ये ऐसा फ्लावर है जिसमें खाली एक ही एसेंशियल पार्ट मौजूद है, या तो एक ही मतलब या तो स्टैमिन है या तो कार्पल है। सो इधर हमें मसला आता है, या तो हमारे पास दोनों में से एक है, या तो फ्लावर अगर इसमें स्टैमिन प्रेजेंट है तो ये तो स्टैमिनेट फ्लावर हुआ, ओनली मेल पार्ट इज प्रेजेंट, या तो ऐसा वाला फ्लावर मोनोसेक्सुअल फ्लावर, यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डाइक्लाइनस फ्लावर, या तो ये हो सकता है पिस्टिलेट, मींस हैविंग ओनली फीमेल सेक्स, दैट इज फीमेल सेक्स, फीमेल पार्ट, यानी इसमें स्टैमिन प्रेजेंट होगा और इसमें कार्पल प्रेजेंट होगा। सो दोनों में से एक, दोनों नहीं, अगर दोनों प्रेजेंट है, आपके पास एक फ्लावर है और इसमें दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, इसमें स्टैमिन भी है, इसमें आपका कार्पल भी है, तो ऐसे फ्लावर को हम कहेंगे इट इज बाइसेक्सुअल, जिससे आपको मस्टर्ड में मिलेगा, ठीक है। और यहां पे आपको क्या मिलेगा, ऐसा फ्लावर है जिसमें खाली आपके पास एक फ्लावर है, you have the flower and the flower you see having only one part, that is one essential part, either stamen or carpel. If stamen, then it is staminate, that is male flower. If it is having only the female part, the pistil or the carpel, it is pistillate flower. ठीक है। So according to sexes, we are discussing the flower, different types of the flower on the basis of sex. So we have monoclinous flower, we have diclinous flower, or we can say we have bisexual and the unisexual. And unisexual, it can be either staminate or it can be either pistillate, depending which type of the sex is present. And if we move forward, so I'm getting my tester right now. If we go forward, we will another type of flower we have another type of flowers, that is eclinus, or it is neuter flower. Without clinus means sexual. और जब हम बात करेंगे monoclinus की, means having both the parts present, यानी हम बात करेंगे bisexual की तो दोनों मौजूद हैं, diclinus condition having two different flowers having male part और the female part, या तो उसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। लेकिन एक ऐसा फ्लावर भी है ना इसमें मेल है ना इसमें फीमेल है, तो इसका मतलब दोनों एसेंशियल पार्ट्स एब्सेंट है, both the essential parts are absent. Such a flower is known as neuter flower. For example, we have some flowers of the sunflowers. सनफ्लावर में कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं जो ना उनमें मेल पार्ट है ना फीमेल पार्ट है, तो ऐसे को हम बोलते हैं न्यूटर और एक्लाइनस। जैसे सनफ्लावर के कुछ फ्लावर्स
सनफ्लावर में कुछ फ्लावर्स ऐसे हैं जो न्यूटर हैं, ठीक है। तो इसी तरह से एक और हमारे पास फ्लावर होता है कभी, उसको हम बोलते हैं पॉलीगैमस, पॉलीगैमस फ्लावर। तो पॉलीगैमस फ्लावर्स ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं, जिनमें बाइसेक्सुअल फ्लावर्स भी मौजूद होते हैं। तो सच टाइप ऑफ फ्लावर्स आर कॉल्ड पॉलीगैमस, मींस हैविंग मोर देन वन सेक्स। सो इसमें यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स भी होते हैं, they are having bisexual flowers, so they have more than one sexes in the flower, that is why they are called polygamous flowers. So hope you are getting, and these points you have to remember very much for going into the pollination, because in pollination we have to discuss self pollination, cross pollination, and I will using these terms. This is the unisexual flower, this is the bisexual flower. So if we does not get these terms, there will be confusion in the pollination, or we can't understand the pollination in the right way as we have to understand it. And we have another two conditions in the flower. The two conditions in the plants are, we have monoecious plants and we have dioecious plants. We have here, according to the sex of unisexuality, according to unisexuality, we have two types of plants. We have monoecious plants, and we have dioecious plants. We have dioecious plants. We have dioecious plants. We have monoecious plants and we have dioecious plants. What are monoecious plants? These plants are those plants which contain only one type of flowers. That is, these flowers, monoecious flowers, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनमें दोनों सेक्सेस एक ही प्लांट में मौजूद हैं, यानी दोनों फ्लावर्स, स्टेमिनेट भी फ्लावर भी, और जो हमारे पास पिस्टिलेट फ्लावर है, मेल फ्लावर भी और फीमेल फ्लावर भी, ये एक ही प्लांट में है। जैसे हमारे पास क्यूकरबिटा है, ठीक है। तो ये कौन सा प्लांट है? The plant in which both staminate and pistillate flowers are present. यानी ये फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल हैं, स्टेमिनेट फ्लावर है, पिस्टिलेट फ्लावर है, लेकिन इस प्लांट में दोनों फ्लावर्स मौजूद हैं। यानी एक पार्ट पे स्टेमिनेट फ्लावर है, दूसरे पार्ट ऑफ प्लांट पे पिस्टिलेट फ्लावर है, यानी मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट में है। सच ए प्लांट इज कॉल्ड मोनोशियस, ठीक है। यानी प्लांट एक ही है, इसी प्लांट में हमारे पास मेल फ्लावर भी है, इसी प्लांट में हमारे पास फीमेल फ्लावर भी है। जब एक ऐसा प्लांट हो जिसमें फीमेल फ्लावर भी हो, मेल फ्लावर भी, तो उसको बोलते हैं मोनोशियस, मींस एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस मौजूद हैं। एक होता है एक फ्लावर में दोनों सेक्सेस मौजूद होना, दैट इज बाइसेक्सुअल फ्लावर। बट ये प्लांट की बात कर रहा हूं, प्लांट हैविंग बोथ द स्टेमिनेट एंड द पिस्टिलेट फ्लावर, यानी इसमें स्टेमिनेट भी है और इसमें पिस्टिलेट फ्लावर भी है। जैसे हमारे पास है क्यूकरबिटा एंड वी हैव मेज भी हमारे पास है, ठीक है। डाइशियस प्लांट में क्या होता है, यहां पे जो स्टेमिनेट एंड पिस्टिलेट, यानी जो मेल फ्लावर्स हैं और फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स। यहां पे प्लांट्स डिफरेंट है, यानी एक प्लांट में खाली स्टेमिनेट फ्लावर्स हैं, मेल फ्लावर्स हैं, और दूसरे प्लांट में खाली फीमेल फ्लावर्स हैं। यहां पे प्लांट एक था, उसी प्लांट में स्टेमिनेट फ्लावर भी था और पिस्टिलेट फ्लावर भी था। यहां पे प्लांट ऐसा है कि इसमें प्लांट्स दो तरह के हैं, मींस डाइशियस, हैविंग टू सेक्सेस ऑफ द फ्लावर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट प्लांट्स। प्लांट यहां पे डिफरेंट है, यहां पे सेम प्लांट था, इसी प्लांट में मेल फ्लावर भी था, फीमेल फ्लावर भी था। यहां पे प्लांट डिफरेंट है, अगर ये एक प्लांट है, ये दूसरा प्लांट है, यानी यहां पे कंडीशन दो डिफरेंट प्लांट्स है, और यहां पे कंडीशन एक ही प्लांट है। इस पे अगर स्टेमिनेट फ्लावर है तो इस पे पिस्टिलेट फ्लावर है। प्लांट एक ही है, इसमें दोनों, एक ही प्लांट में दोनों सेक्सेस मौजूद हैं, दोनों तरह के फ्लावर्स मौजूद हैं, और यहां पे दो डिफरेंट प्लांट्स है। कंडीशन याद रखनी है, एक ही प्लांट है मोनोशियस प्लांट में, और यहां पे दो प्लांट्स है,
इस एक प्लांट में एक खाली मेल फ्लावर्स हैं और दूसरे प्लांट में खाली फीमेल फ्लावर्स हैं. सो दिस प्लांट इज हैविंग ओनली स्टैमिनेट फ्लावर्स एंड दिस प्लांट इज हैविंग ओनली फीमेल और पिस्टिलेट फ्लावर्स. सो यहां पे दो प्लांट्स पे दो डिफरेंट सेक्सेस हैं. दैट टाइप ऑफ प्लांट इज कॉल्ड डायशियस. लाइक हमारे पास डेट पाम है और हमारे पास मलबरी है. सो ये प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें मेल प्लांट्स अलग होते हैं, फीमेल प्लांट्स अलग होते हैं. यानी एक प्लांट ऐसा है जिसमें खाली मेल फ्लावर्स हैं और दूसरा प्लांट ऐसा है जिसमें खाली फीमेल फ्लावर्स हैं. सो this is on the basis of unisexuality. If both unisexual flowers are present on the same plant, that is monoecious. If the unisexual flowers are present on the different plants, that are known as dioecious plants. So hope you are getting me. Now we will come on the topic which we have to discuss, that is pollination. Pollination. So first we will go on the history of the pollination. Historical background of the pollination. तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए आपने आप में ऐड कर दो, या आपकी इंफॉर्मेशन को ऐड करेगा. और चूंकि हमने पॉलिनेशन तो पढ़ना ही था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में इंफॉर्मेशन मिलेगी अबाउट पॉलिनेशन. देखें, पहली बार पॉलिनेशन के बारे में एक साइंटिस्ट हमारे पास है, वेरी मच नोन साइंटिस्ट, फादर ऑफ द बॉटनी, इसको भी कहते हैं थियोफ्राइटस इन 300 BC. थियोफ्राइटस ने पहली बार ये जो पॉलिनेशन का एक्ट ऑब्जर्व किया था इन द डेट पाम में, और उसने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम है एनक्वायरी इन द प्लांट्स. उसमें उसने डिस्कस किया था इवेंट ऑफ पॉलिनेशन इन द डेट पाम. सो पहली बार हिस्टोरिकली अगर हम जाएंगे पॉलिनेशन के बारे में, तो सबसे पहले थियोफ्राइटस ने अपनी राय दी थी. उसने एक किताब लिखी थी, उस किताब का नाम था एनक्वायरी इन द प्लांट्स. इसी बुक में उसने मेंशन किया था एक्ट ऑफ पॉलिनेशन इन द डेट पाम. इस प्लांट में, डेट पाम में, इसने एक्ट ऑफ पॉलिनेशन मेंशन किया था. इसने अपनी किताब लिखी थी प्लांट्स के बारे में, एनक्वायरी इन द प्लांट्स, एंड इन दैट वेरी मच बुक ही हैज मेंशन्ड द एक्ट ऑफ पॉलिनेशन इन द डेट पाम. सो first scientist who discussed it on the view of the pollination, that was Theophrastus in 300 BC. Actually Theophrastus was referring to Herodotus. He was referring to Herodotus, ठीक है, जिसने पहली बार मेंशन 500 BC में मेंशन किया था pollination, but actually it was ceremonial pollination. मीन्स ये बादशाह जो थे, बादशाह सेरेमोनियल फंक्शन पे, सेरेमोनियल मौकों पे, रिलीजियस मौकों पे, असल में रिलीजियस एक्ट के लिए पॉलिनेशन की टर्म, यानी डेट पाम में, जो हमारे पास डेट पाम है, इनमें पॉलिनेशन को रिलीजियस मौकों पे वो करते थे. और इसको सबसे पहले हेरोडोटस ने रेफर किया था, और थियोफ्राइटस ने फिर हेरोडोटस की इस रिलीजियस एक्टिविटी को, जो एरेजियन किंग्स, जो बादशाह लोग थे, वो इस पॉलिनेशन को इन डेट फॉर्म में रिलीजियस त्योहार की तरह मनाते थे, और ये एक्चुअली हेरोडोटस को रेफर कर रहा था. उसके बाद अगर मैं वी हैव अनदर साइंटिस्ट दैट वाज कॉल्ड कैमिरेरियस in 1694. इसने एक्चुअली फ्लावर, एंथर, पोलन एंड ओव्यूल को डिस्कस किया था. हैज डिस्कस्ड द फ्लावर, एंथर, पोलन, ओव्यूल in his book known as Desexoplantrum. This was a book of the Camerarius in 1694. He discussed what is flower, what are anthers, what is pollen, and what is ovule in the sexual reproduction. What is the importance of these? He was the first to mention in his book in 1694, that is Desexoplantrum. And we have another scientist that was called Colreuter. We have Colreuter in 1691. उसने role of insects,
he mentioned the importance of role of insects in the pollination, So Collier in 1691 was the first to mention the importance of the role of the insects in the pollination. So here we have with the different background of the pollination. So Theophrastus first use of the term act of pollination he observed. He mentioned in his book Enquiry in the Plants. We have another book that was De Saxoplantrum. It was written by Camerius, and actually Theophrastus was referring to the Herodotus. And we have another scientist who just knew the importance of the insects in the pollination. So we will discuss what actually pollination is. So this was a historical background. We have mentioned about this. So only I'm going to now starting my topic and I'm ending my topic. But before ending my topic, I will mention only one thing there. Actually, definition of the pollination. In the next lecture, I will discuss different types of pollination. But here, one thing we can discuss here is pertinent to mention is the definition of pollination. So pollination, it is the transfer, the process of transfer of pollen grains from anther of the stamen to the stigma of the carpel. So this is the pollination, the transfer of the pollen grains or microspores from the anther, that is stamen, to the stigma of the carpel. This process is known as pollination. So in another lecture we will go through different types of pollination. That's all for today.